27வது தசகம் அமிர்தமதனம் கல்யதாம் ராகம். दुर्वासासुरवनिताब्द दिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमरुदिते शशाभचक्रं काशान्तिस्त्वतितर देवदांशजानां शापेन प्रतितजरेत निर्जरेन्द्रे देवेष्वभ्य सुरजितेषु निष्प्रभेषु सर्वाद्याः कमलजमेत्य सर्वदेवाः निर्वाणप्रभव समं भवन्तमापः ब्रह्माद्यैः स्तुतमहिमा शिरं ददानीं प्रादुष्यन् वरदपुरपरेण दाम्ना हे देवातिथिजकुलैर्विदाय सन्तिं पीयूषं परिमततेति पर्यसास्त्वं सप्तानां कृतवती दानवैः पुरौके मत्तानां नयति मदेन मन्दरात्रिं पृष्ठेऽस्मिन् पतरमिवोद्वहन् ककेन्द्रे सत्यस्त्वं विनिहितवयोदौ आदाय धृतमत वासुकिं वरद्रां पादौ तौ विनिहित सर्वबीजजाले प्राप्ते मदनविदौ सुरासुरैस्तैः व्याजात्वं भुजगमुखे करो सुरारीन्. कूर्मावतारं श्लोकम्. क्षुब्द्राद्रौ क्षुपितजलोदरे ददानीं दुग्धाब्धौ गुरुतरपारदौ निमग्ने देवेषु व्यतितमेष तत्प्रियैषी प्राणैषीः कपटतनुं कठोरपृष्ठां वज्रादिस्थिरतर गर्भरेण विष्णो विस्तारात् परिगत लक्षयोजनेन अम्बोदे गुहकरकेन वर्ष्णात्वं निर्मग्नं क्षितितरनादमुन्नीतेन उन्मग्ने झटिति तथा तरान्तरेन्तरे निर्मेदुर्दृढमिकसम्मदेन सर्वे आविश्य द्वितय कणोऽपि सर्पराजे वैवस्व्यं परिशमयन् अविवृतास्तान् उत्तामप्रमण जवोन्नमद्गिरीन्द्रः न्यस्तैकस्थिरतर हस्तपङ्कजं त्वाम् अप्रान्ते गिरिसादय प्रमोदात् उप्रान्तानुनुवु रूपवत् पुष्पवर्षाः दैत्यौके भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चितार्थे कारुण्यात् तव किल देववारिवाः प्रावर्षन्नमरगणान् न दैत्यशङ्कान् उद्भ्राम्यत् बहुतिमिनक्रचक्रवाले तत्राप्तौ शिरमदितोऽपि निर्विकारे एकस्त्वं करयुक्कृष्ट सर्पराजः सम्राजन् भुवनपरेश पाहि रोगात्. सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द.